So students, let us move on to the next example now. So this time I'm going to take example number 12, which is given in the book. So it is, you can see, a child playing with building blocks which are of the shape of cubes has built a structure as shown in figure 13.25. So यहाँ पे आप एक structure दिख रही होगी. So यहाँ पे एक child जो है वो खेलते हुए यहाँ पे building blocks जो कि किस structure में आप देख सकते हैं, cube की structure में, right? So इस तरह से cubes को one by one एक के ऊपर एक stack करते हुए उसने इस तरह की एक structure form की. Now you can see the structure, the unit is used here is a cube. So आपके यहाँ पे cube given है. Now if the edge of each cube, so आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्यूब की जो साइड है दैट इज गिवन टू अस एज 3 सेंटीमीटर. सो हमें पता है सभी क्यूब्स की साइड कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर ईच, राइट? सो दैट इज वी नो. सो यहाँ पे हमें बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड. सो हमें इस स्ट्रक्चर की वॉल्यूम बतानी है, राइट? सो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे, कितने क्यूब्स यहाँ पे यूज हुए इस स्ट्रक्चर को बनाने में. सो देयर आर 15 इन नंबर, राइट? सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो हैं वो मैंने काउंट कर लिए. So they are 15 in number, right? So यहाँ पे अगर मैं एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूं, so then I will simply multiply that volume by 15. So that means the total volume of this structure will be obtained, right? So सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास टास्क क्या है कि मुझे एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. We know if I just start off the solution here, so यहाँ पे given क्या है आपके पास, you can see the edge or you can see the side of a cube. So that is, you can see 3 centimeters, right? Also you can see the number of cubes is 15, right? In number, right? So first of all, I'm going to find out the volume of one cube, right? So we know the formula, that is a cube, or you can say edge cube, right? So यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, अगर मैं इस एज को a एज्यूम कर लेता हूं, सो आपके पास a की लेंथ कितनी है, 3, राइट? सो 3 का क्यूब, दैट मींस 3 into 3 into 3. सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इन सेंटीमीटर. सो दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब. हमें पता है वॉल्यूम किस में निकलती है, क्यूब में, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, राइट? गेटिंग द पॉइंट. नाउ देयर आर 15 सच क्यूब्स. सो मैं क्या करूंगा, एक क्यूब की वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, number of cubes से, यानी 15 से, then we will get the volume of the structure, right? So you can see volume of structure built by the child is, you can see simply 27 into 15, right? So अगर मैं इसको multiply करता हूं, so let me just check out. So 27 by 15, so that will be 5 7 ja 35, 3 carry, then 5 2 is 10, plus 3 13, then 1 into 27 is 27, right? So totaling it, you can 7 plus 3 10, so 2 plus 2 4. So आपके पास कितना आ गया, 405 centimeter cube. So this is going to be the volume of this whole structure that is built by the child playing with, you can see, building blocks which are having the unit as cube, right? So इस तरह से आपको questions को solve करना होगा. The question is going to come in the upcoming exercise. So you can see that was all in this example here. So now, as we are known to the formulas, so let us now jump on to the exercise. So यहाँ पे हम बात करने वाले हैं exercise 13.5 की, जिसके अंदर हमें equation solve करने हैं जो कि उन्हीं formulas पे based है जो हमने देखे हैं, right? So if I just roughly write those formulas here for the help. So the first formula was volume of cuboid, right? So if you just remember, there was length into breadth into height, and you can see the second is, you can see the volume of the cube, right? So that was calculated by, you can see, a cube, right? Both will be in cubic units, remember that, right? So that will be in cubic unit. जो भी unit उनके साथ लगी होगी उसका cube होगा, right? Either it is meter or centimeter, right? Now let us see the first question of the exercise 13.5. So which is, you can see that a matchbox measures 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter, right? So यहाँ पे आपको क्या given है, length, breadth और
let me just correct that, the height here, right? So यहाँ पे आपको length, breadth और height given है एक match box की, right? So if I just draw a figure of a match box, you can see that is of a cuboid, right? So किस तरह का होता है? Cuboid का होता है. So now हमें पता है यहाँ पे एक मैच बॉक्स की लेंथ गिवन है that is 4 सेंटीमीटर, then उसकी breadth है 2.5 centimeter and the height is 1.5 centimeter. Now what will be the volume you can see of a packet containing 12 such boxes? So इस तरह के कितने बॉक्स हैं? टोटल 12 boxes हैं जो कि एक पैकेट के अंदर है, right? So what will be the volume of that packet? वो हमें पैकेट की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. कैसे करेंगे? As we have seen the example in the previous video, there was similar kind of thing existing. So आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मैं एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम निकालूंगा simply by the formula. You can see length into breadth into height because हमें पता है ये कौन सी स्ट्रक्चर है? Cuboid, right? So and the formula to calculate the volume of this cuboid structure match box will be length into breadth into height. That we know. Now further हमें पता है कि एक पैकेट के अंदर कितने सच मैच बॉक्सेस हैं? That are 12. So यहाँ पे मैं इस वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 12 से. That will get you the volume of the packet, right? So this is the layout. So यहाँ पे start करते हैं solution को. So the first thing is the given thing. So हमें यहाँ पे क्या given है? The length of, you can see the match box. So that is 4 centimeter. Further, the breadth of match box is 2.5 centimeter and the height of match box that is 1.5 centimeter, right? So यहाँ पे हमारे पास length, breadth और height given है. Now we know the formula to calculate the volume of this match box. That will be length into breadth into height, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ कितनी है 4, breadth कितनी है 2.5 into height कितनी है आपके पास 1.5, right? So now we have to solve this. So सबसे पहले यहाँ पे मैं decimal remove कर लेता हूँ. So that will bring 10 and this decimal remove will bring 10 here, right? So यहाँ पे मैं decimal को हटा देता हूँ. So अब मैं इसको solve करता हूँ. आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर मैं denominator में you can see multiply करता हूँ, so that will be 100. Now numerator में क्या आपके पास 4 into 25 into 15, right? So अगर आप देखें यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 25 जा 100. So 4 के डबल में 100 कितने बचाएगा 25 पे. Now 25 1 जा 25, 25 1 जा 25. So it cancel out हो गया. So that will only we got is 15. So 15 into 1 that will be 15. So this is the volume of matchbox in centimeter cube, right? So हमारे पास एक वॉल्यूम आ गई है मैच बॉक्स की, that is 15 centimeter cube. Now we know what we have to do is simply multiply this volume of one matchbox by the number of matchbox in that packet, right? So now this time if I just rub the space above, so you can see the volume of packet containing 12 match boxes, right? That will be 15 into 12, right? So यहाँ पे हमें पता है volume of one match box is 15 centimeter cube and there are 12 match box in that packet, right? So यहाँ पे total volume कितनी होगी 15 into 12. So let me just check out. So 2 5 are 10, 1 carry, 2 1 are 2 plus 1 3, then 1 into 15 is 15, right? So adding this will give me 180 centimeter cube. So this will be the volume of the packet which is consisting of, you can see 12 match boxes, right? Having the volume as 15 centimeter cube each, right? So this is how you have to solve the first question of this exercise. So students, now let us move on to the next question of this exercise, that is question number 2. So let us see what is given to it. So यहाँ पे given है that a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. So यहाँ पे आपको क्या given है एक cuboidal water tank. So यहाँ पे अगर मैं roughly एक cuboidal water tank बनाऊं, so how it will look like, let me just tell you. So cuboidal na, so let me just make a rectangle type structure here, right? So this is how you can see we have got a cuboidal water tank, right?
So now this time you can see हमें यहाँ पे इसकी length जो है that is given to us as 6 meters, then the breadth is 5 meters, you can see the 5 meter wide, then the height is simply 4.5 meters, right? So ये deep है, that is the height here of this cuboidal water tank, right? So यहाँ पे हमें dimensions given है इस cuboidal water tank की. Now how many liters of water it can hold? So अब हमें बताना है कि इसके अंदर कितना वाटर जो है ये होल्ड करके रख सकता है, राइट? नाउ रिमेंबर दिस क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज होलो फ्रॉम इनसाइड. ये अंदर से क्या है? होलो है, इसमें सिर्फ एम्प्टी स्पेस है. नाउ रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि जब हम किसी होलो फिगर की बात करेंगे सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट? सो यहाँ पे हम वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे जो वाटर इसके अंदर होल्ड कर सकता है उसकी जितनी वॉल्यूम होगी वाटर की, so वो volume of water which this you can see cuboidal tank can actually hold, that is the capacity of that cuboidal tank, right? So इसकी जितनी capacity है उतना ही volume of water ये hold कर पाएगा, right? अब आपको समझ में है एक्चुअल में कि capacity क्या होती है, कि जो ऑब्जेक्ट ये है यानी कि the cuboidal tank, इसकी कैपेसिटी कितनी है, जितना ये वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने अंदर स्टोर कर सकता है, राइट? सो द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इट कैन एक्चुअली होल्ड इन इट इन द इंटीरियर, वो इस ऑब्जेक्ट की क्या है, कैपेसिटी होती है. सो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कैपेसिटी एंड अ वॉल्यूम. तो जब भी आपके पास होलो फिगर या ऑब्जेक्ट होगा तो आपको क्या निकालना होगा, कैपेसिटी, राइट? सो लेट अस नाउ सी. सो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर मैं गिवन क्या है मुझे, द length of cuboidal water tank, right? So हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, that is 6 meters. Then हमारे पास breadth जो है of cuboidal water tank, so that is 5 meters, and you can see the height, the depth here you can see given to us. So the height of cuboidal water tank is 4.5 meters, right? So यहाँ पे हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यानी तीनों डायमेंशंस गिवन है इस फिगर की. So अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसकी कैपेसिटी निकालता हूं. So the capacity of cuboidal water tank simply will be calculated by length into breadth into height. Formula वही रहेगा. So but here it will you can see it is the hollow, so we are not going to find the volume, it is the capacity actually of, you can see the volume of water it can actually hold, right? So कितना volume of water इसमें store होगा, that will be calculated by length into breadth into height. That will be the capacity of that tank, right? So हम यहाँ पे volume of water calculate करें, that is calculated by length into breadth into height, and in turn it will be called as the capacity of this tank, right? So यहाँ पे length कितनी है आप देख सकते हैं, that is 6 into breadth कितनी है 5 into height कितनी है 4.5, right? So now let me just solve this. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5 decimal remove, that will bring 10. So 5 1 5, 5 2 10. Then further you can see 2 1 2, 2 3 6, right? So आप देख सकते हैं 3 into 45. So what it will be, 45 into 3, let me just check out. So 3 5 15, 1 carry, 3 4 12 plus 1 13. So 135 meter cube. So this is going to be the capacity of this cuboidal water tank. You can see to hold the volume of water equal to this, right? So now you can see we have to find out the, you can see the how many liters of water it can hold. So आप देख रहे हैं अभी ये मीटर क्यूब क्या है, इस टैंक की कैपेसिटी है, राइट? नाउ मुझे मीटर क्यूब से कन्वर्ट करना है अगर लीटर में. सो मुझे पता है दिस इज द गिवन थिंग हियर, सो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो टू कन्वर्ट यू कैन सी दिस कैपेसिटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. गेटिंग माय पॉइंट? सो मुझे अगर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो जिससे मुझे पता चलेगा कितना लीटर ऑफ वाटर जो है ये होल्ड कर सकता है, राइट? सो ये तो हुई कैपेसिटी 135 मीटर क्यूब. अब इसी कैपेसिटी जितना ही पानी ये होल्ड कर सकता है. सो मुझे अगर वाटर इन द फॉर्म ऑफ लीटर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 135 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से. सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर, राइट? सो दिस विल बी, यू कैन सी 135 3 times 0. So that will be the
you can see volume of water this cuboidal tank can actually hold. Getting my point? So this is how you have to solve the question based on, you can see the capacity here, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question of this exercise. So that is question number 3rd, right? So iske andar hame kya given hai? Let me just read it first. So a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. So यहाँ पे आपको एक cuboidal vessel given है. So let me just draw a cuboidal vessel here. So you can see something like this, right? So this is a cuboidal vessel. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो length given है that is 10 meters. So this is the length and you can see it is 8 meter wide. So that is the breadth, right? So यहाँ पे हमें length और breadth given है and we don't know the height of it, right? So how high must it be made to hold 380 cubic meter, right? So यहाँ पे हमें क्या given है 380 meter cube. ये जो इसकी capacity है, you can see वो हमें given है that you can see this is the capacity of, you can see something which it can actually hold, right? So now you can see अगर एक liquid इसके अंदर fill करना है, so the capacity of it is already given कि इतना meter cube of liquid it can actually hold inside it, right? So यहाँ पे हमें already given है, so let me first write the given thing here. So यहाँ पे हमें क्या given थी पहली चीज, the length of, you can see vessel, right? So यहाँ पे 10 meter है, then you can see the breadth is also given. So the breadth of vessel, if I just, let me just correct that. So that is 8 meter, right? So यहाँ पे length or breadth given है and we have to find the height. You can see how high this should be made, कितनी height की ये बननी चाहिए so that it can hold 380 meter cube. You can see the capacity of liquid, right? So अब यहाँ पे सबसे पहले the capacity which is given to us, capacity of vessel, that is 380 meter cube, right? So that is already given here. अब मुझे पता है the capacity is actually equal to the volume of substance, like here the liquid it can actually hold, right? So capacity क्या होती है, जो substance की volume जो है वो इसमें hold हो सकती है. So capacity is equal to the volume of substance, right? So यहाँ पे हम volume of substance कितनी कैसे निकालेंगे, that is by length into breadth into height, right? So equal to 380 meter cube. Now हमें यहाँ पे length given है already, that is 10. Then हमें यहाँ पे क्या given है, breadth भी given है, that is 8. So let me just also write the meter here. So यहाँ पे meter, then the height is what we have to find out. So keep it as h. So यहाँ पे equal to 380 meter cube, right? So obviously 10 into 8, that will be 80. Now meter into meter, that will be meter square into h is equal to 380 meter cube, right? So अब ये देख सकते हैं ये divide में जाएगा यहाँ से, तो height आ जाएगी. So that will be 380 meter cube divide by 80 meter square. So अब square से cube कटेगा तो 1 meter बच जाएगा. Then you can see 0 से 0 cancel out होगी. So हमारे पास क्या आ गया, 38 upon 8 meter, right? So अब मैं इसको solve कर लेता हूँ further. So if I just divide this, so यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 को अगर मैं 8 से divide करूँ, so 8 4s are 32. So subtracting it will give 6 here. Then a decimal, then a 0. So 8 7s are 56 minus that will be 4. So decimal लगी हुई है, that will give 0. 8 5s are 40, right? So आपके पास कितना आ गया, 4.75 meters, right? So ये क्या हो गई आपके पास, height हो गई इस cuboidal vessel की, right? So that is 4.75 meters. So इतनी height का ये cuboidal vessel बनाना पड़ेगा so that it can hold 380 meter cube liquid inside it, right? So this is how you have to solve such type of questions here.